Okay. If you can hear me So clearly, can I I've start? talked to Lisa, she's just joining. Okay. Who's joining? Aliza Ahmad. Okay. Okay. Right. So should I resume or wait? Sir, just a minute. Okay. Okay. Hold on. Hold on. Yeah. Lisa, you can hear me? Can I start now? Okay, so how an operating system can maximize the use of resources. So first of all, obviously, what you're supposed to know is what a bootstrap is. So bootstrap, remember when I told you when you turn on the computer, the operating system.exe file is actually extracted and which goes into your ROM. So the bootstrap is a program that basically loads the part of the OXE file into the main memory, okay, from the hard drive. So this is how the initially your operating system files are approached, and this is how the operating system actually is loaded. So Bootstrap program plays a vital role in the starting up of this. So flash memory, if you talk about flash memory, obviously we flash memory is referred to as RAM as well. Your solid state hard drives are flash memory. Okay, flash memory can be split into two parts. Okay, so the part where the operating system resides. Okay, this is why the operating system can be updated by the mobile phone. So one is where the operating system is, and the part where the apps data are stored. So one is obviously for the operating system, and the other one is for the apps. So you know all this, right? The RAM, okay, right. The operating system task is to maximize the utilization, okay, to obviously resources. So, defining. Resources management can be split into the three parts, resources, the CPU, the memory, the input output systems. Okay, right. Let's come. So if we look at your uh, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर की हम बात करते हैं हम इधर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर की we need direct memory access controller which needs to allow hardware to access the main memory independently of CPU. Okay, so DMA basically will be used to initiate the data transfers. Okay, so आपका जो भी यहाँ हो रहा होता है आपका सीपीयू से डेटा बस के थ्रू मेरे मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर DMA this will be actually communicating with all the peripheral devices, okay, and transferring all the information. So all the peripheral devices आपकी यूज हो रही होती हैं through the DMA. Okay, so वही बात वही हो रही है कि when you start the computer, it checks all the peripheral devices, आपका bootstrap load करता है all the files from the os.exe file, आपका DMA चेक करता है कि आपके all peripheral devices have been connected or not. It initiates the data transfer, okay, to check. Data transfer actually means to check as well. Okay, and once it's done, an interrupt signal is sent to the CPU from the DMA, telling that okay, fine, everything is fine. You can carry on with the booting up of the process. Okay, so data transfer rate generally was likha hua hai fine, just for reference. Okay, kernel. Now, kernel actually is a very important component of your operating system. Kernel is the main part जिसके through you actually load everything. Whenever we talk about the operating system, actually हम technically kernel की ही बात कर रहे होते हैं. तो kernel basically होता क्या है? Kernel की अगर हम बात करते हैं तो kernel is the core component of operating system. We always name it as the core part of the OS. Obviously, it is the part. It's responsible, obviously, to manage all the system resources. Okay, all the system resources that are being used वो kernel ही करता है. आपकी जो enabling communication होती है between the hardware and the software वो kernel के through होती है. So operating system, yes, operating system is the outer, but inside you have the kernel that communicates with CPU, the memory, and then the hardware. Okay, so whenever we say an operating system is an interface, technically we talk about the kernel. Okay, so it's responsible for that.
बट कर्नल के ऑब्वियसली बहुत एक्सटेंसिव है, मगर हम या सी एस में डिस्कस नहीं करते ए लेवल्स के. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्नल्स वी हैव. माइक्रो हाइब्रिड कर्नल्स होते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपकी फंक्शंस ऑफ कर्नल आपको पता होने चाहिए, विच इज आपका प्रोसेस मैनेजमेंट. Your kernel will be responsible for your process management. Process management का क्या मतलब होगा? Obviously, it will handle uh, process creation, okay, termination, okay, and obviously scheduling. So ये भी सारा आपका यही करेगा. Sorry, I turned off. Scheduling भी ये करेगा. ठीक है, स्केचिंग पड़ेगा. फिर आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट. योर कर्नल ऑल्सो हैव मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मेमोरी मैनेज का मतलब है कि इट विल मैनेज the allocation and deallocation of memory. It will keep a track of everything. So fine, then obviously you will have is the your memory management. So that's another component, important component of your kernel, memory management. So I just talked about the allocation and the deallocation. So allocation and deallocation भी यही काम करेगा आपके. ये कर्नल की एक one of the functions जो है आपका. आपका कर्नल will also, sorry I'm messing it too up. So you'll also have is another thing. You will, I'm recording this lecture, I'll share this lecture with you, no worries. What else do we have? We also have another feature of the kernel जो what होता है, वो आपका होता है device management. So device management obviously I just explained you कि all the communication with all these devices, if the interface की मैंने बात की है, obviously facilitation कौन कर रहा है? ये आपका कर्नल ही कर रहा है communication. फिर हम बात कर रहे हैं आपके फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. आपके जो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की जो है, ये भी आपका वही करेगा. ओके, विच एक्चुअली मींस फाइल सिस्टम मैनेजमेंट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स योर फाइल स्टोरेज. ओके, ये सारा भी कर्नल के थ्रू होता है. योर रिट्रीविंग ऑफ फाइल, योर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका कर्नल के थ्रू ही होता है. ठीक है. So these are all the properties of your kernel basically. ठीक है. So if we look over here, what are these things? So GUI fine, using devices, explain, simplifying, saving, retrieving data fine. Okay, right. So that's what your kernel actually is. Process management. Multitasking, I'm pretty sure you've heard of multitasking. Your recent processors actually do multitasking, which allows you to do multiple tasks at the same time. Technically, it's the property of the operating system as well. कर्नल की property में ही आता है. Scheduling करना होता है. Multitasking only when you will be able to schedule your tasks properly. We will talk about different ways we can schedule the tasks, right? There are two types of multitasking operating systems. One is preemptive. Preemptive processes are preemptive after each quantum time. Non-preemptive processes are preemptive after fixed time. So इसका मतलब ये है कि इसमें actually क्या होगा? You will not have fixed length. Okay, there will be variable length. कुछ छोटी होंगी, ज्यादा होगी. इसमें फिक्स टाइम के बाद आपका क्या होगा? You will be able to do the processes. So in case of preemptive, जी बेटा. सर ये Yes. जो जी जी बोलो. इसमें sir, can you hear me? क्या? इसमें I had to ask नॉन टाइप जो है इसमें if a process travel is finished तो हाँ, आपकी जी जी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, सॉरी बोलो. तो कैन ऑल ऑफ यू हियर मी क्लियरली? या मुझे सारा की सिर्फ आवाज नहीं आ रही?
रेस्ट सर ऑफ सारा इट। की आवाज नहीं आ रही, आपकी आ रही है। अच्छा, सारा, कैन यू टाइप इन द चैट द क्वेश्चन? आपकी थोड़ी ना लैग कर रही है थोड़ी सी आवाज, आई डोंट नो व्हाई। या ओके, शी डिड। ओके, शी सेइंग इज in non-preemptive one, if the time limit is up in the process dropped or cut away half. Yes, we'll discuss it. Different methods होते हैं how to deal with it. Okay, it will cut halfway, but it will come back to it. Okay, so it will not leave it. So like let's say अगर उसने 6 seconds milliseconds का टाइम दिया हुआ है, तो हम 4 अगर एलोकेट करते हैं तो 2 जो बचेगा उसके लिए उसको टाइम पर रख देगा, एंड इट विल एग्जीक्यूट इट आफ्टरवर्ड्स। इसलिए एट टाइम्स वो प्रोग्राम की तरफ हॉल्ट हो जाता है और दोबारा इट एग्जीक्यूट्स द अदर प्रोग्राम एंड कम्स बैक टू इट अगेन। ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। So, preemptive resources are allocated to a process for a limited time. Okay. Once the resources are allocated to process, the process retains them until it has completed its burst time or the process has switched to waiting state. ठीक है? Non-preemptive waiting state, obviously, because उसमें wait करना है कि दोबारा process को start हो तो उसका complete हो. The process can be interrupted. The process cannot be interrupted while running. It must first finish or switch to waiting state. बिल्कुल preemptive जरूरी होता है. High priority process arrive in ready queue on frequent basis can mean there is risk that low priority process may be starved for resources. If a process with a long burst time is running in CPU, there is a risk of another process with a shorter time may be starved of resources. Right? Okay. There is more flexible form of scheduling. This is more rigid form of scheduling. Obviously, it is. So yes. Um, इसका अब आगे इसकी डिस्कशन और हमने करनी है। ओके, देयर इज लो लेवल scheduling होती है आपकी। लो लेवल scheduling बेसिकली डिसाइड्स which process should go next. Next, get the use of CPU time. Okay, which of the process in the ready state can now be put into running state. So actually इसका जो objective होता है ना आपका लो लेवल scheduling की is to maximize the system throughput. Ensure responsive time is acceptable and ensure that the system remains stable all the time. Okay. So this is what low level scheduling is. Okay. Process scheduling. Now, what is process scheduling? So अगर हम इसमें बात करते हैं प्रोसेस scheduling की, so obviously process scheduling depends on पहले पहले होता है इट्स कैटेगरी. ओके, और category is batch, online, or real time. Okay, whether the process in the CPU a large calculation or not. ठीक है, मैं एक सेकंड में इसको ओपन करके ना आप किसी और एप्लीकेशन में लेट मी डिस्कस इन अबाउट जोहा इज joining now. ओके, सो हियर वी गो. अगर हम प्रोसेस स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, सो आई कैन राइट इट ओवर हियर. सो व्हाट इज प्रोसेस स्केड्यूल? बेसिकली प्रोसेस स्केड्यूल आपका एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, which is responsible for what? It's actually responsible to manage the execution of processes on the CPU. So whatever execution are happening in the CPU, it is responsible for that. It will decide the order of it. So जो भी उसका order होगा वो भी decide करेगा, उसकी duration को भी decide करेगा. Obviously, this is what process would do. Okay, so all the execution की बात हो रही है. So all the execution, their order, their duration. Okay, um, it will also help in the um, optimizing the CPU usage. Yes, क्योंकि obviously अगर आपका प्रोसेस स्केड्यूल अच्छा काम करेगा तो आपका सीपीयू का यूजेज भी ऑप्टिमाइज होगी. ठीक है ना? तो जो आपका प्रोसेस स्केड्यूलर है उसके बेसिकली सम आर देयर देयर इंपॉर्टेंट की फंक्शंस.
वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपका होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर आपका होता है सीपीयू एलोकेशन। फिर आपका होता है योर लोड बैलेंसिंग। सो ये क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट obviously means is that it will manage all the processes that are being created, all the processes which are being suspended right now, okay, और terminate हो रहे हैं, ठीक है, ये manage करेगा। CPU allocation का obviously मतलब ये है कि it will decide which processes um, should should go should work with maximum capacity. Load balancing का मतलब होता है it will distribute resources for its optimum performance. So yes, in that particular case, it will do the load balancing to make sure that the optimum, uh, your optimal system, आपके जो भी है, resources available हो. So ये सारा आपका obviously your process schedule is doing all that. So they mentioned all that over here. Turnaround time, ठीक है. Once the task process has been given priority, it can be affected by the deadline of the completion of the process. Okay, how much CPU time is needed, the waiting time, and the memory allocation. ठीक है. वैसे तो प्रोसेस scheduler में there are different kinds of process schedulers भी होते हैं, मगर यहाँ उन्हें डिस्कस नहीं किए। आपके लॉन्ग लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म schedulers होते हैं। There are things, so we have to do all that. Process states. So there are different process states that we have. Okay. So process control block. What's a process control block? इसके बारे में डिस्कस करते हैं. So as far as your process control block is concerned, it's actually data structure जिसके अंदर contains all the data needed to process to run. It will include what? It will include the process state. It will include process privileges. It will also have the registers, for example, program counter, memory address register ये होंगे. Priority होगी आपकी कौन सी scheduling information है. The amount of CPU time होगा इसमें. Okay, the process ID होगी. So process state इसलिए हम उसको कहते हैं data structure है. Why? Because it is holding the following information within it, right? So contains all the data needed to process to for a process to run. Any process to run has to have the following things. So you need to remember all that, ठीक है? So process जब run हो रहा होता है, obviously process जब run हो रहा है, it will be running, it will be ready, it will be blocked. So if you look at this following example में ये बताया हुआ है कि न्यू प्रोग्राम है, प्रोग्राम रेडी है क्यू में जाने के लिए, ओके? सो रेडी स्टेट में जाता है, वेटिंग फॉर सीपीयू टू डू इट, ओके? देन ऑब्वियसली इट गोज ओवर हियर, रनिंग स्टेट प्रोग्राम, रनिंग सीपीयू, ठीक है? आप अगर फिनिश हो जाता है तो ऑब्वियसली टर्मिनेटेड हो गया. इफ इट्स इंटरप्टेड तो ऑब्वियसली वो दोबारा स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? somehow blocked state program may be somehow the process waits for an event, input output and placed into block. So maybe it's blocked or दोबारा जाता है. So interrupt is something else, block is something else. Okay, interrupt maybe किया हो, interrupt may be interrupt because of some external uh, issue आया, उसकी वजह से extra हुआ block हुआ interrupt, ठीक है? So the following states are there: running state, ready state. These are the states available. अच्छा, इसमें और एक्सप्लेन किया हुआ है. We'll talk about, okay, to investigate the concept of ready queue and block queue a little further. We will investigate what happens in the round robin process. We will talk about round robin process afterwards, but जरूरी है वो. Suppose two process P1 and P2 have completed the current status. So उन्होंने ये बताया हुआ है कि हाई लेवल scheduling को अगर रेडी क्यू में आपके प्रोसेस गए, सीपीयू में वो जा रहे हैं, फिनिश हो गए, प्रोसेस कैन आइदर बी प्लेस्ड एट द रियर और रेडी क्यू. सो ऑब्वियसली कोई प्रोसेस होगा वो जाके इसके रियर में प्लेस हो जाएगा, जो जो ब्लॉक हुआ हुआ है, सो दैट वो दोबारा उसको हम इनिशिएट, ठीक है? सो यस, दिस इज द वे this has been explained. The following summary what happens in the round robin process. So जो आपका राउंड रॉबिन होता है, इट्स वन ऑफ द वे राउंड रॉबिन. सो राउंड
रॉबिन होता क्या है? वेल इट्स वन ऑफ द स्केजुलिंग एल्गोरिदम हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम इसको? वी यूज इट फॉर टाइम शेयरिंग। दैट्स द मेन पर्पस, वी यूज इट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि इट एम्स टू गिव ईच प्रोसेस एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, so there will always be an equal opportunity, okay, to use the CPU. So there will always be an equal opportunity to use the CPU. ये राउंड रॉबिन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मगर इक्वल अपॉर्चुनिटी किस तरह होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी इस तरह होगी क्योंकि इट विल बी डूइंग व्हाट? इट विल बी गिविंग बाय रोटेटिंग। इट विल बी रोटेटिंग, ओके, थ्रू ईच प्रोसेस इन द क्यू। वो बार बार रोटेट होता रहेगा प्रोसेस क्यू में, सो दैट इट कैन बी डन। सो जो राउंड रॉबिन है, तो अगर हम ओवरव्यू करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है, लेट मी समहाउ एक्सप्लेन दिस ओवर हियर। आई वांट टू यूज दिस ऑल द टाइम। मैं कहीं और ओपन करूंगा तो वहाँ आई विल नॉट बी एबल टू रेफर टू द बुक व्हिच आई वांट टू। सो अगर हम राउंड रॉबिन के हम ओवरव्यू देखते हैं, उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो यह है कि जो राउंड रॉबिन है, इसमें ये होता है कि इट विल असाइन ईच प्रोसेस इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। पहली बात तो ये होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम को हम एक्चुअली कहते हैं इज द टाइम क्वांटम। इट्स नोन एज द टाइम क्वांटम। ओके, फिक्स्ड टाइम, व्हेनेवर refers to fixed time we actually mean as time quantum। रिमेंबर, इसको याद रखना। ठीक है, um, आपका जो राउंड रॉबिन होता है ना, दिस इज ऑल्सो अ preemptive। Why is it a preemptive? Yes, it's obviously preemptive because if a process doesn't finish within its time quantum, okay, so वो यह क्या करेगा कि um, it is preemptive, वो pause करेगा and the CPU moves to the next process in the queue. So obviously it has to keep on moving next. Okay, अगर टाइम खत्म नहीं होता, वो pause होगा and the CPU will move to the next queue. राउंड रॉबिन को इसलिए हम ये भी कहते हैं कि राउंड रॉबिन इज एक्चुअली इट डज फेयरनेस। व्हाई डज इट डज फेयरनेस? हाउ इट डज फेयरनेस? बिकॉज एवरी प्रोसेस दैट यू हैव, उसको हम एक इक्वल शेयर दे रहे हैं सीपीयू का। व्हेन वी आर गिविंग इट एन इक्वल शेयर ऑफ द सीपीयू, तो ऑब्वियसली इट्स फेयर। ठीक है, तो it's ideal for time sharing systems। okay, so जब आपने प्रॉपर टाइम शेयरिंग देनी होती है कि सिस्टम को, वहां हम ऑब्वियसली आर यूज करेंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस इक्वल टाइम स्लाइसेस, व्हेन टाइम स्लाइस एंड्स, टाइम, मैं हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है, राइट? ओके, scheduling root algorithms, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस दिस। इसमें बेटा सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling। दिस इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, the data added to the queue first is the data that leaves first। So suppose we have four processes P1, P2, P3, P4, which have burst time this. The ready queue will be, so आपका देखो P1 23, so P2 will be waiting 23 seconds, okay, P3 will be waiting 27, okay, so P3 will be waiting 36 and P4 will be waiting 39। ठीक है, so technically आपके पास क्या होगा? दिस विल गिव अस द एवरेज वेटिंग टाइम। तो अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास ये है, जो 0 + 23 + 27 + 36 यही आएगा, एज यू कैन सी ओवर हेयर। क्यों? क्योंकि आपका ये दिस प्लस दिस, ठीक है, ये आएगा। तो इसको डिवाइड बाय 4, तो आपके पास ऑन एवरेज आपके पास ये वेटिंग टाइम ये आ रहा है।
ठीक है, इज दिस क्लियर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग, एफ सी एफ एस समझ आई, किसी को नहीं समझ आई? Why did we get 21.5? नहीं सर, इट्स अंडरस्टैंडेबल। वेरी गुड। अच्छा, अब वी हैव टू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ इट। अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फॉर स्केजुलिंग की बात करेंगे एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर स्केजुलिंग की, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्चुअली होता ही है कि इस अप्रोच में क्या होता है, these are the best approaches to minimize process wasting time. The burst time of the process should be known in advance, although this is not really possible. We will consider the same for obviously. इसमें हम करेंगे with um, shortest job for scheduling. The process requires the least CPU time is executed first. So the least, that's the main thing. So जो भी least होगा वो पहले है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो इस केस में क्या होगा, P4 पहले आएगा जिसका लीस्ट टाइम था, फिर ऑब्वियसली एंड पे आएगा P1 जिसका टाइम से ज्यादा था। इसका इनमें फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है, ऑब्वियसली यू कैन सी इज के इनिशियली इसके लिए तो वेटिंग टाइम कोई नहीं है, P4 के लिए देयर इज नो वेटिंग टाइम। देन वी हैव इज P2 के लिए वी हैव दिस मच टाइम, देन P3 के लिए वी हैव दिस मच टाइम, एंड देन P1 के लिए वी हैव दिस मच टाइम। सो overall this will be 6.5 as compared to your this which is 21. Yes or no? You can see that, right? Then we can look at our next one. The queue is ready. इसकी बात हो रही है, first will be this, जी होगी इसका, ठीक है। So they have explained it's ready queue is this. राउंड रॉबिन की बात करें, मैंने भी एक्सप्लेन आपको किया राउंड रॉबिन थॉरली के, इसमें फिक्स टाइम स्लाइसिंग यूज होती है, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट। ओके, once a process executed during the time slice removed in place block queue, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें obviously what the average waiting time of the process calculated as this. So you can see is for the same four processes P1 P2 we get ready queue, तो इसमें it will be this much. So आप देख रहे हैं इधर P1 आपका क्या हो रहा है, in this particular case is your 39 minus 23, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये कैन समवन टेल मी? हैव अ लुक एट इट। जी जी, आइडिया हो रहा है? सर ये एवरेज टाइम कैलकुलेशन किस तरह हो रही है यहाँ पर? हम्म। सर ये एवरेज टाइम कैलकुलेशन हो रही है तो लाइक बड़ी किस तरह हो रही है? देखो, मैं आपको इसको मैं आपको किसी और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल गिव मी वन सेकेंड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, मैं वैसे जैसे एग्जांपल तो लेट्स वी हैव P1 P2 P3 P4, इनको हम देते हैं 10 मिली सेकेंड, we can give this 4 millisecond, we can give this 6 millisecond, right, and we can give this 8 millisecond। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखते हैं ना, तो फर्स्ट राउंड में इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड, हम इसको हमेशा यूं करते हैं कि P1 जो होगा ना executes for, for 4, so let's say the time quantum is 4 milliseconds, तो P1 एक्चुअली करेगा 4 milliseconds में, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया आपका 6 मिली सेकेंड फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फिर आपका P2 आया, P2 में आपका हुआ क्या था, 4, तो आपका ऑब्वियसली 4 मिली सेकेंड्स हो गया और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आपका P3 आया, P3 आपका है 6, तो आपका अब क्या बचा? आपका बचा 4 पूरा हो गया, सो यू हैव 2 मिली सेकेंड्स रिमेनिंग, ठीक है। P4 आया, तो ऑब्वियसली यू हैव इज 4 मिली सेकेंड्स रिमेनिंग, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लो। जब हम जाएंगे सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में क्या होगा? सेकेंड राउंड में जो आपका P4 ये था रिमेनिंग,
उसमें क्या होगा, रिमेनिंग 2 मिली सेकेंड्स आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट फॉर 4, रिमेनिंग 2, यस और नो? ओके, नो सॉरी, तो भाई फोर ये हो जो जाएगा, 4 है, ये फोर हो तो जाएगा, वैल्यू टू हमें रह, गिवन होगी। जी जी आप सही कह रहे हो, 4 रह जाएगा और एंड पे 2 रह जाएगा, यस और नो, बिकॉज इट वाज 6, यस और नो, ठीक है ना। तो आपका P2 की जरूरत नहीं होगी, यस कंप्लीट हो सर। चुका था। P2 इज कंप्लीटेड, जरूरत नहीं होगी। P3 पे आएंगे हम। P3 में क्या होगा, आपका 2 मिली सेकेंड रिमेनिंग तो एग्जीक्यूट्स 2 कंप्लीट हो जाएगा। 4, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो फाइनल राउंड आएगा, थर्ड राउंड, उसमें एक्चुअली P1 विल एग्जीक्यूट जो 2 मिली सेकेंड रह गया था और वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली यूं करेगा। पॉइंट इज के जो रिमेनिंग रह जाते हैं ना, उनको वो यूं यूं करता है एग्जीक्यूट। आई होप यू गेट द पॉइंट थ्रू दिस एग्जांपल, yes or no? Get my point? This is यस our सर। यस सर। this is the actual example, the way it works, ठीक है। So this is the way it works. इंटरप्ट हैंडलिंग, ये एक्चुअली पहले भी कर चुके, यू नो व्हाट इंटरप्ट्स आर, आप P2 में पढ़ चुके हो उसको, P1 में सॉरी। सो इंटरप्ट्स बेसिकली व्हेन यू सेंड अ कमांड टू प्रिंटर, एक्सेप्शंस आ सकते हैं आपके, फॉल्ट्स आ सकते हैं उनके तरफ, कोई सॉफ्टवेयर में ट्रैप्स आ सकते हैं, दिस इज व्हाई इंटरप्ट्स एक्चुअली हैपन। तो ये आपने एक्चुअली पहले पढ़ा हुआ, उसी की elaboration। मेमोरी मैनेजमेंट में दे टू थिंग्स, यू हैव पेजिंग, ओके, एक होता है कॉन्सेप्ट पेजिंग का, ठीक है, और एक होता है आपका सेगमेंटेशन का, ठीक है। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज दिस, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज पेजिंग। सो अगर हम इसको होल्ड प्लेस, या दिस इज फाइन। सो पेजिंग बेटर होता है कि हमने एक्सप्लेन किया होगा, यस। Your memory in paging, your memory is divided into fixed size blocks, okay, so that these are your pages, fixed size blocks में इनको divide किया जाता है, okay। इनको आप in physical memory actually, physical memory we call them frames, okay। In logical memory we actually call them pages। So physical memory में we call them frames and we call them pages, ठीक है। So each process आपका जो होता है वो divide हुआ होता है into pages, as you can see over here, okay। It's divided into this and it's loaded into the available, it's loaded in the uh, physical memory, ठीक है। So ये this is the process of your paging। As far as segmentation is concerned ना, segmentation में होता ही है कि memory is divided into variable size segments, okay। There will be always be variable size segments, each will be correspond to logical uh, division, ये okay। So each segment represents a specific part of the program, okay। So you can see over here is आपका ये जो आपका होता है segment, ये different segments हैं, okay। बने हुए हैं आपके, ये फिजिकल मेमोरी है। सो ईच सेगमेंट दैट यू हैव represents a specific part of the program and has its own base and limit। आपके पास यहाँ होता क्या है, आपके सेगमेंटेशन में अच्छा, इनके डिफरेंसेस यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, हाँ मे बी से समझ आ जाएगी आपकी। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस, आइडिया हो जाएगा। पेज इज अ फिक्स साइज मेमोरी ब्लॉक, a segmentation is variable, ठीक हो गया। A page, since the block size is fixed, it is possible that all blocks may not fully be used. It can lead to internal fragmentation। Internal fragmentation का मतलब ही है कि अगर वो फिक्स साइज के हैं तो मे बी all of them might not be used। Yes। How come they might not be used, क्यों? What do we mean by internal fragmentation? जी। So obviously देखो बात सुनो, अगर and this process does not use the entire allocated block, तो obviously तो वो जगह स्पेस रह जाएगी ना, they will be leaving unused space within it, okay। This leftover space जो है within the